આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ સમાચાર સુરતથી મળી રહ્યા છે। ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામને લઈ રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાને પ્રતિક્રિયા આપી છે। સચિવ અધિકારી ભારે જહેમત ઉઠાવીને જેને કારણે આ પરિણામ પ્રાપ્ત થયું છે। 100% પરિણામ લાવનાર તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે। નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ લાગુ કરવા માટે ગુજરાત અગ્રેસર છે। મિત્રો, ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારબાદ આ પરિણામ હાસિલ થયું છે। माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबना मार्गदर्शन नीचे गुजरात में नवी शिक्षा पद्धति अमलीकरण थई गई है। परीक्षा पद्धति अंदर सुधारा करीने सिलेबसनी अंदर थी ज एक्जाम लेवी एवं मार्गदर्शन साथे अमारा उच्च अधिकारी सचिव श्री अने तमाम शाळाओना संकलन साथे आज गुजरात में खूब सारू परिणाम प्राप्त थयुं छे। हूँ आशा राखुं छुं कि आवनारा समय में 100% परिणाम प्राप्त थशे अने ड्रॉप रेशियो जे कॉलेज पास करवानो छे ए ड्रॉप रेशियो हमेशा माटे अमे माइनस कर देशुं। पूरेपूरा बाळक ग्रेज्युएशन सुधीनो अभ्यास करे ए गुजरात सरकार 5 वर्षना रोड मेप थी चाली रही छे। जे बाळक नापास थया छे ओछुं परिणाम आव्युं छे, ओछा टका आव्या एने हूँ खुशी मनाववानी सलाह आपू छूं, कारण के तमे जिंदगीनी परीक्षा नापास नहीं थया। एक पेपर नापास थया होय तो आज ज मेहनत करो, 1 महीना में पास थयेलानी हरोळ में तमारुं नाम आवी जशे। खुश रहेजो, मम्मी पप्पा ने खुश राखजो। मम्मी पप्पाना तमे जीव छो, माटे मम्मी पप्पा ने खुश राखवुं ए सौथी मोटी परीक्षा में पास थवा जेवुं। माटे आप सौ तेजस्वी छो एवी हूँ शुभकामना पाठवुं।